हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन। पारिक से हम ये कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 आज डिस्कस करेंगे। फॉरेंसिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द चैप्टर ऑन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। डिफरेंट इसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल, अब चाहे वो इंडिविजुअल लिविंग हो या इंडिविजुअल डेड बॉडी हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉरेंसिक्स टू आइडेंटिफाई द राइट पर्सन। और ये इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि देखें, सही आइडेंटिफिकेशन से ही केस रिजॉल्व होते हैं। सो विक्टिम, एक्यूज्ड, all these identifications are supreme important in any investigation जिसमें आप ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने कसूर किया है, किसके साथ जुल्म हुआ है। सो फॉरेंसिक मेडिसिन जूरिस्प्रूडेंस में अगर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का चैप्टर आपका वीक है then you will struggle quite a lot. Okay, so please pay attention to the chapter. It's going to be super important. So first of all, what is identity and when does the question of identity arise? ये important है क्यों? So होती क्या identity और ये क्यों important है? By identity we mean establishment of individuality of a person. So for example, I am Asif Qureshi. That's my identity and it's very important to identify me. वरना मेरे बैंक अकाउंट का एक्सेस, मेरे ट्रैवल्स का एक्सेस, मेरे बहुत सारी पर्सनल चीज़ों का एक्सेस, दे आर ऑल लिंक टू माई ID. If I am not identified by any of the systems, then there will be a havoc, एक mess create हो जाएगा. Similarly, if I commit something wrong, it is again also important to identify me correctly. कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी जगह मेरे भाई को पकड़ के ले जाएं। सोचें ना, आइडेंटिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। So identification of a person or a dead body means recognition of that person or the dead body. यानी उसको आप पहचान लें, रिकॉग्नाइज कर लें। It is based on certain physical characteristics unique to the individual, and ये physical characteristics आज की वीडियो में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। Complete identification means the absolute fixation of individuality of a person. यानी आप ये फिक्स कर दें कि भाई यही बंदा है आसिफ कुरैशी। हमने इसके फिंगरप्रिंट्स भी देख लिए, हमने इसका DNA भी चेक कर लिया, हमने इसके बॉडी में जो मार्क्स हैं वो भी चेक कर लिए, एंड वी फिक्स द आइडेंटिटी एज आसिफ कुरैशी. So partial identification means ascertainment of only some facts such as race, gender, but total identity is fixing the identity to a person. In the living, in civil courts, identification is required in cases such as insurance, pension, inheritance claims. सोचें, marriages, ये सारे वो चीज़ें हैं जिसमें ID ज़रूरी है. My wife got married to me, so my identity is very important. If I'm not identified, see what will happen. फिर किसी और के साथ अगर हो जाए, वो मूवी आप देख रहे थे, थ्री इडियट्स में आमिर खान तो कहीं और होता है, उसका दोस्त उसके साथ फेरे लेना शुरू कर देता है करीना के साथ, और वो कहता है भाई रोक दो वरना थोड़ी देर में हमारी शादी हो जाएगी. सो आइडेंटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेंशन किसी गलत बंदे को मिल जाए, सोचें. सो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि लिविंग पर्सन्स के साथ एसोसिएटेड हैं तो सिविल मैटर में, क्योंकि मैरिज और ये इंश्योरेंस और पेंशन ये सब सिविल मैटर्स हैं. बट क्रिमिनल मैटर्स में भी इंपॉर्टेंट है कि किसी ने कोई गड़बड़ की है, कोई असॉल्ट, कोई रेप, कोई मर्डर, इन तमाम चीज़ों में बंदे का आइडेंटिफाई होना ज़रूरी है. सो दैट्स ऑल एसोसिएटेड विद द लिविंग पर्सन. नाउ आइडेंटिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर डेड पर्सन्स. डेड पर्सन्स में आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, फायर, एक्सप्लोजन, एक्सीडेंट्स, व्हेन अननोन डेड बॉडी इज फाउंड. इन केस ऑफ डिकम्पोज बॉडी यू नीड टू आइडेंटिफाई कि किसकी बॉडी है. समटाइम्स देयर आर पर्सन्स मिसिंग, उन बंदों को आप ढूंढ रहे होते हैं, तो कोई डेड बॉडी कहीं से मिलती है, तो अब ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो बंदा मिसिंग है ये उसी की बॉडी है या नहीं. ओके, द टर्म कॉर्पस डेलिसिटी मीन्स द बॉडी ऑफ ऑफेंस, a sense of crime and not the physical body of victim, and in case of homicide it includes positive identification of the body, proof of its death by criminal act of accused. Once the identity is established, a trial for murder can take place. So identity इतनी important है कि उसके बगैर trial start ही नहीं होता basically. So ये जो term है, it's a technical term including identification of the person and then starting the trial against the person. Visual identification is not reliable in majority of the cases. Suppose आपको समंदर से dead body मिली है या आधी कटी हुई जली हुई dead body मिली है, तो आप देख के नहीं पहचान पाएंगे. Therefore, two important marks of identification must be noted. Two level identification, and they must be described in the detailed certificates whether the person is living or dead. जब आप उसको identify कर रहे हैं, so दो marks आपने identify करने हैं. The description of the identification mark, such as a mole, should include all relevant particular. कहाँ है वो मोल, चेहरे पर है, कितने सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट आईब्रो, डिटेल होनी चाहिए, उसका साइज, उसका कलर, हर चीज़ डिटेल में बतानी है. ठीक है. Now the points to be considered for establishment of identity are race of the person, religion of the person, sex of the person, age of the person, general congenital. All these features contribute in one way or the other to the identity of the person कि आप establish करेंगे. Fingerprints, even
footprints, any congenital malformations, any birthmarks such as moles, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं. किसी की बॉडी पे स्कार्स होते हैं. अगर किसी भी वजह से आइडेंटिटी को ऑब्लिटरेट किया गया तो ये भी आपको अपनी रिपोर्ट में लिखना है कि फॉर एग्जांपल किसी की बॉडी को इंटेंशनली डेथ के बाद या मर्डर के बाद समंदर में डाल दिया गया है. सो दैट्स एन अटेम्प्ट टू डिमोलिश द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन. सो अगर ऐसी कोई अटेम्प्ट है वो भी रिपोर्ट करनी है. सो दैट्स गोइंग टू बी ए सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर नाउ. अब कुछ फीचर्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं आपके साथ, सच एज आइडेंटिटी, फिजिकल आइडेंटिटी के लिए क्या क्या चीज़ें अभी मैंने आपको जो बताया ना वो किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे. सो रेस कैसे इस्टेब्लिश करेंगे. देयर आर सेवरल वेज बाय विच यू कैन, बट दिस इज नॉट एन 100% बिकॉज इसमें धोखाधड़ी हो सकती है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज ड्रेस्ड लाइक a Muslim but is actually not a Muslim. If a person is dressed like a sadhu but is actually not a sadhu, so that can actually give you a wrong impression. But in general, race can be determined by clothes, complexion, hair, eyes and lips. So these are the things जो स्पेसिफिक रेसेस की अलग अलग होती हैं या हो सकती हैं. सो ये आपको जहन नशीन करना, याद रखनी है चीज़ें. स्केलेटल फैक्टर्स कैन ऑल्सो हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ द रेस, बिकॉज बाज़ रेसेस में फीमेल की लेंथ फॉर एग्जांपल ज़्यादा है, बाज़ में कम है, दो सॉर्ट ऑफ थिंग. सो रेस कैन बी आइडेंटिफाइड. क्लोथ्स, ट्रेडिशनल अगर किसी ने फॉर एग्जांपल धोती साड़ी इस तरह की चीज़ें पहने तो आप आइडेंटिफाई इतना एटलीस्ट करेंगे, परहैप्स द पर्सन इज दैट ऑफ एन इंडियन ओरिजिन. अगेन मैंने बताया कि ये 100% क्लू नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग दे कैन एक्चुअली कैमोफ्लाज देयर रेशियल एंड क्लोथ आइडेंटिटी. कॉम्प्लेशन, स्किन इज डार्क इन निग्रूज एंड ब्राउन. सो कॉम्प्लेशन से भी आपको पता लगेगा कहाँ का बंदा है, बिल्कुल गोरा है, फेयर है तो शायद यूरोपियन हो, इस तरह की चीज़. हेयर से आपको पता चल जाता है कि ब्लैक हेयर्स यूजुअली एशियंस में होते हैं, चाइनीज़ में, जापानीज़ में, इंडियन, पाकिस्तानीज़ में, अफ्रीकन में बाज़ औक़ात आपको शॉर्ट कर्ली हेयर्स मिलते हैं. सो इस तरह से रेडिश ब्राउन या इस तरह के कलर आपको मिलेंगे, ब्लॉन्ड टाइप कलर यूरोपियंस में. सो दे कैन गिव यू एन आइडिया अबाउट द ओरिजिन ऑफ द रेस ऑफ द पर्सन. Eyes, Indians have dark brown eyes usually. I mean, look at the eyes of some of the movie actresses. They're pretty greenish in color. I don't know lens लगाती हैं या original है, but usually Indian Pakistani people, they have dark brown eyes. So यहाँ से एक idea हो जाता है. Lips, Negroes for example has very thick lips. So these are the features जिनसे आपको identification में race को identify करने में थोड़ी help मिल जाती है. Then religion. Hindus and Mohammedans for the largest population of the India. So Hindus हैं and Muslims हैं. Traditionally speaking, certain externals of the dress and the religious markings may help to distinguish. So, for example, Hindu males are normally not circumcised. So that's one feature. But ये भी एक change हो रहा है. Many Hindu males are also circumcised these days. Then there is sacred thread, necklace of wooden beads and all these things. तावीज़ हाथ पे बंधे हुए, these type of thing can help somebody identify. But again, these are not 100% identification marks, because हो सकता है कि कोई हिंदू हो और circumcised हो सकता है कोई मुस्लिम हो और उसने कोई ड्रेसअप ऐसा किया हुआ, तिलक लगाया हुआ माथे पे फॉर एनी रीजन, वन और द अदर. सो इट कैन बी डिसेप्टिव. Mohammedan males यानी मुस्लिम मेल्स आर नॉर्मली सर्कमसाइज. सो दैट्स वन फीचर. उनके कपड़े वपड़े देख के भी अंदाजा हो जाता है बाज़ औक़ात. सो वी हैव सम क्लू अबाउट आइडेंटिफिकेशन बाय दीज आई कॉल सब्जेक्टिव मैटर्स. एंड हमेशा जब भी आप कोई लाइव बॉडी या कोई डेड बॉडी आइडेंटिफाई कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक फॉर these features. यहाँ से start लेना चाहिए. And then we will obviously move towards more objective things जो कि इससे परे होंगी कि कोई आपको धोखा तो नहीं दे रहा, यानी कोई हिंदू है और मुस्लिम की तरह ड्रेस तो नहीं कर रहा, या कोई मुस्लिम है हिंदू की तरह ड्रेस तो नहीं कर रहा. This sort of thing. Okay. The next question in hand is describe the evidence on which the sex is determined. It's very important to identify gender of the person जो भी case में involved है. And let's talk about it. So gender, the evidence of gender, मैं word sex की जगह usually word use करता हूँ gender. Okay. So if you find me using this word gender, bear with me. So the evidence of gender is divided into the most certain evidence and the highly probable evidence and the presumptive evidence. So most certain evidence वो होगा which if found will tell you definitely कि the body is male or female. Highly probable will give you a clue which is highly probable, and presumptive is the lowest category. इसमें आपका confidence level सबसे कम होगा. In normal cases in the living, यानी civil cases वगैरह, the most certain evidence of sex या gender depends on the position of the ovaries in the female. If ovaries are there, that person is a female person. Okay, and test is in the male. The highly probable evidence of gender includes the position of sexual structures, developed breast, female distribution of hair, appropriate physical development, distribution of subcutaneous. ना ये सारी वो हैं कि आपको देख करके लगेगा ये ऐसा female body
but they are highly probable. There are certain clinical conditions जिसमें the body appear like female externally, but there are no ovaries. So, I mean, in true sense, the body is not female, but highly probably ऐसा लग रहा है देख करके ये this is a female body. And then there are presumptive evidence of gender, which includes outward appearance of the individual, the features in the general contours of the face, the presence of distribution of the hair, the clothing. यानी apparently कपड़े वपड़े देख के आपको लग रहा है कि ये फीमेल है. अब हो सकता है कि वो फीमेल ना हो. आई मीन यू नो देर आर ख्वाजा सरा जिसे हम कहते हैं, या ट्रांसजेंडर्स की तरह जो लोग अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, इंटरनली दे मे बी मेल बट दे आर अपीयरिंग एज फीमेल्स. सो इस तरह देखने पर जो आप ओपिनियन बनाते हो इसको हम कहते हैं प्रिजम्पटिव ओपिनियन या प्रिजम्पटिव एविडेंस. फिर अगर बॉडी सेक्सुअल पार्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप्ड हैं, द बॉडी इज एक्चुअली इट्स नॉट ओनली द ड्रेस बट द बॉडी इज ऑल्सो लुकिंग लाइक अ फीमेल बॉडी, दिस इज द नोन एज हाईली प्रोबेबल एविडेंस. But ovary अगर है, then only you say that this is the most certain evidence. Okay, so तीन तरह की evidences हैं which you have to look for. Okay, now in the doubtful cases, true gender of a person can be determined from a thorough external examination, obviously of the body, genitalia, a thorough internal examination, gonadal biopsy, nuclear sexing, and इसमें bar bodies वगैरह check करते हैं कि females हैं या male, and study of the sex chromosome. So I mean, there are ways by which you can for sure ascertain the gender of the person in question क्या है. Now, what is nuclear sexing? A method of sexing cells may be of help in determining the gender in doubtful cases, particularly in the decomposed body या जिसकी body के बहुत थोड़े बहुत parts मिले हैं. A small plain or convex mass of chromatin known as the bar body is present close to the nuclear membrane. That is very important, okay? In the buccal smear, now, बकल स्मेयर आप समझ रहे हैं क्या है? बकल स्मेयर मतलब मुंह से एक कॉटन बड डाल के थोड़ा सा स्मेयर निकाल लिया. द परसेंटेज ऑफ द सेल शोइंग द प्रेजेंस ऑफ बार बॉडीज, तो ये क्रोमेटिन के पास एक स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, डेंस स्ट्रक्चर, वेरीज फ्रॉम अबाउट 20 to 80 in females and very low number in male. So if you see 20 to 80% of the cells के अंदर बार बॉडी, यानी आपने बकल स्वाब निकाला, उसको स्लाइड पे आपने चेक किया और ज़्यादातर सेल्स में बार बॉडी दिख रही है, इट्स परहैप्स मोर लाइकली दैट इट इज़ फीमेल. अगर बहुत कम सेल में 2, 3, 4 में दिख रही है, परसेंट की बात कर रहा हूँ, 4% ऑफ द सेल्स, तो दैट इज़ एक्चुअली नेगेटिव फॉर द बार बॉडी टेस्ट एंड दैट्स यूजुअली अ मेल बॉडी. ओके, so that's easy. This is known as nuclear sexing because you're looking at the nucleus. Okay, the study of sex chromosome is another way which involves the demonstration of XX chromosome. So that is basically karyotyping. So karyotyping से आपको ये पता लगता है कि exactly कौन से type के sex chromosomes हैं. अगर XX हैं तो definitely this is going to be a female body. अगर XY है तो this is definitely going to be a male body. Okay. Now, medico-legal aspects, sex determination is important as regarding identification of the inheritance, marriage, divorce, because certain, tribes may, certain religions may, even the inheritance is distributed in a way कि male का share different हो सकता है, female का different हो सकता है, that sort of thing. तो ये identify करना बहुत ज़रूरी है यार, male है कि female है, तो gender की implications हैं, okay, very important. So इस diagram में जो दिखाया हुआ है, these are perhaps the external features. So दिखने में obviously this person is looking like a male, इसमें beard है, look at the shape of the chest, then the penis is there, scrotum is there. These are all identification as male, and this body is looking like a female. You see the developed breast hair, you see the facial structure, you see the hip broadening, you see the external female genitalia. So externally, if you ask me, highly probable evidence ये है कि this is a female body and this is a male body, but I can only be very very certain if I find testis here and if I find ovaries here. Okay, right. So next बात करते हैं about variations from normal gender, and very important to understand the concepts associated with intersex and concealed sex individuals. So variation from normal gender may be because of any congenital defects of development जिसमें single mass of cells are defective, और उससे फिर there are issues in development of normal gender, and this may result in the presence of certain male and female structures,
imperfect differentiation of the external genitalia either in male or female, small penis, enlarged clitoris, ये सारे genital defect, congenital defects हैं जिसकी वजह से there are variations in the gender. ठीक है? Intersex states, these are conditions in which male and female characters such as gonad, physical forms and sexual behaviors, they coexist. There could be so many different, there are so many different syndromes जो हम embryology वगैरह में पढ़ते भी हैं. They are classified broadly into 4 groups. गोनेट में एजेनेसिस हो रही है, गोनेटल डिसजेनेसिस हो रही है, यानी सही से नहीं बन रहा है. ट्रू हर्माफ्रोडाइटिज्म है, दोनों मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं. एंड सूडो यानी फॉल्स हर्माफ्रोडाइटिज्म है. गोनेटल एजेनेसिस इज अ कंडीशन विच द सेक्सुअल ऑर्गन्स हैव नेवर डेवलप्ड, आइदर टेस्टिस और ओवरीज दे हैव नेवर डेवलप्ड. Now, if they are never developed, that's an important thing to consider in forensics. Dysgenesis का मतलब ये है कि the structures are present, but they fail to develop at puberty. And the common examples include the Klinefelter syndrome, the Turner syndrome, right? इनकी details में भी इस वक्त नहीं जा रहा. True hermaphroditism means it's actually a very rare condition जिसमें दोनों sexual characteristics मौजूद हैं. External genitalia may be both sexes, internal genitalia may be of both the sex, genders containing ovaries as well as testes, and the word we use for that is usually ovotestis. So that's true hermaphroditism. Then there can be pseudo-hermaphroditism, false hermaphroditism. In this condition, there is a lack of clear-cut differentiation of the external gender. So, ambiguous genitalia hai, okay? They are classified as male or female according to the presence of testes. If testes are there, they are considered as male identification. If it is XX, then this is considered obviously as a female identification, okay? Concealed sex ka matlab hai criminals sometimes attempt to conceal their gender by a change in dress or the way they behave, and that can be simply detected by a physical examination. So if there is a criminal who is actually a male, for example, but is wearing like female clothes and lipstick लगाई हुई है, तो ये कहलाता है concealed gender. सिंपल है, आप इसको अनड्रेस करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे एंड देन द रियलिटी विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ एज से एसोसिएटेड डिस्कशन हर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का आप कह लेंगे फंडामेंटल इशू होता है. आपने देखा है ना तमाम इन्वेस्टिगेशंस में कि एज ऑफ द डेड बॉडी क्या थी, विक्टिम की एज क्या लग रही है. सो एक्चुअली हम एज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं 25 साल की उम्र तक बड़ी एक्यूरेसी के साथ, मतलब +-1-2 ईयर्स, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन अबाउट अप टू 25 years of age can be determined actually by using combination of data coming from teeth, ossification of bone, height and weight and miscellaneous parts which include birth record and ये सारी अगर इन इन्फॉर्मेशन को मिला दिया जाए तो chances of identifying correct age is very very high up till the age of 25. okay, the information when considered individually is not of much value. यानी अगर सिर्फ आपको टीथ के बारे में पता हो उससे आप एज एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते. अगर आपको सिर्फ ossification का पता हो तो आपको वेग आइडिया हो, लेकिन combine them all together and then your diagnosis about the age will be very very good. Teeth. For age estimation from teeth, it is necessary to know the differences between two sets of teeth, the time of their eruption, the period when their root calcification is complete, and this can be ascertained by a simple X-ray examination. So if you have good understanding of this forensic stuff and you get a good X-ray, then you are good to go. Okay, and you should know कि जनाब small temporary teeth के क्या characteristics हैं, permanent teeth के क्या characteristics हैं, so that you can identify just by looking at them. So for example, permanent teeth will be big, broad, heavy and strong, crowns ivory white color के होंगे. So all these things, and you can identify कि भाई ये बड़ा बंदा है, बड़ी एज का बंदा है. These are permanent teeth. So there are two types of teeth, temporary and permanent. Temporary teeth are usually 20 in number, और इनके division इस तरह से है: 4 incisor, 2 canine, 4 molars in each jaw, so that makes about 20. And permanent teeth are usually 32 in number. We have 4 incisors, सामने के दांत, and 2 canines, नोकीले दांत, and 4 premolars and 6 molars in each jaw. The time of eruption of teeth usually gives a good indication of the age up to 18 to 25 years. अगर इस bracket में आप काम कर रहे हैं. In general, as compared to the permanent teeth, the temporary teeth are smaller except for the molars. So ये differences यहाँ detail में इस table में दिए हुए हैं. Generally, temporary dentition begins about 6 months of age and completed by 2.5 years. The average child should have 8 teeth at 1 year. That is normal. इससे कम है तो issue है, ज़्यादा है तो issue है. 16 teeth at 1.5 years and 20 teeth at about 2 to 2.5 years. So ये usual growth rate of temporary teeth. Okay, the temporary teeth begin to then shed off from the 6 years of age. इस age से start होता है, and again in detail you can refer to this table. कि eruption time
इंसाइजर्स टेम्पररी टीथ का क्या क्या है, कौन से दांत कब आते हैं, कब उनकी रूट कैल्सिफिकेशन होती है, परमानेंट टीथ का क्या हिसाब किताब है. ओके, सो दीज आर वेरी नाइस टेबल्स. फॉर एग्जांपल परमानेंट टीथ जो मोलार्स अपीयर होते हैं इस एज ब्रैकेट में अपीयर होते हैं. एंड थर्ड मोलार जिसको विजडम टीथ भी कहते हैं, अकल दाढ़, दैट कम्स वेरी वेरी लेट. ओके, क्योंकि जब आप में विजडम आती है तब आप इतने साल के होते हैं. दैट्स द सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट. एनीवेज, द परमानेंट टीथ अपीयर फर्स्ट इन द लोअर जॉ एंड देन, सो ऑल दिस डिस्क्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट इफ यू आर लुकिंग एट अ केस. तो आपको केस में अगर सो फॉर एग्जांपल एक डेड बॉडी मिलती है और सिर्फ आपको उसका स्केलेटन मिलता है, कंकाल मिलता है, इस कंकाल में आपको टीथ को ज़ाहिर एग्जामिन करना है. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन विच यू लर्न हियर विल बी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द पर्सन यूजिंग द टीथ. उसकी एज का पता लगा सकते हैं आप. The presence of one wisdom tooth usually means that the subject has actually passed the age of 17. If there are two, about 19. If there are three, about 21. So that's so important. सिर्फ wisdom teeth को देख के आपको एक rough idea मिल रहा है कि age कितनी है. If the wisdom teeth are erupted, an X-ray should be taken to ascertain if the roots are calcified or not. If they are not, there is a strong presumption that the age is below 25. देखें कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. आपको कंकाल मिला है और सिर्फ दांत मिले हैं. आपने वो दांत देखकर उसका एक्सरे कराकर ये बता दिया कि एज 25 साल से कम है ना. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. Normally complete calcification, so this is again all the details which are present here in the table. Gupta's method of age estimation consists of microscopic examination of the longitudinal section of the central part of the tooth to assess the changes in the teeth as a result of wear and tear. These changes are graded into 6 different types. और इससे एज का आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं. एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल पर्टिकुलरली इफ़ यू आर डीलिंग विद अ पर्सन जिसकी सस्पेक्टेड एज 25 से 60 साल है. 25 साल तक तो ये दांत की मॉर्फोलॉजी और फोलॉजी देख के आप बता देते हैं बड़ा इजीली. ठीक है. देन बॉयड हैज़ डिवाइज्ड अ मेथड फॉर एक्यूरेट एज एस्टिमेशन बाय मीन्स ऑफ इंक्रीमेंटल लाइन्स. तो वो लाइन्स कैलकुलेट करके, सो दीज आर काइंड ऑफ हिस्टोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जिससे आप बता देते हैं कि जी एज कितनी है. सो एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट या एज ए स्टूडेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन आपको ये सारे वेयर अबाउट्स पता होने चाहिए कि टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टूवर्ड्स आइडेंटिफाइंग द एज ऑफ द पर्सन. देन टीथ के बाद जो नेक्स्ट कैंडिडेट है एज आइडेंटिफिकेशन के लिए वो है बोन्स की ऑसिफिकेशन. It's very important as well. So bones की स्टोरी ये है कि bones of the human skeleton develop from separate ossification centers. अब एक bone है उसमें ये एक ossification center हो सकता है जिससे bone बढ़ना शुरू होती है, दूसरा ossification center. So from these centers ossification process till the bone is completely formed. ये पूरा चलता रहता है. These changes can be studied by means of X-ray. X-ray करके आपको पता लग जाता है कि bone कितनी बनी है, ossification centers किधर हैं. It is therefore possible to determine the approximate age of the individual by doing X-rays of the bone till ossification is complete. While the time of ossification gives a good indication of the age, it should be remembered that there are variations. Union of epiphyses in the cartilaginous bone take place earlier as compared, male or female में gender में differences हो सकते हैं. Under tropical conditions, ossification is observed earlier than in temperate area. So point ये है कि अगर आप मेरे earlier discussion को refer करो कि alone if you look at teeth, alone if you look at ossification data, they will not give you an appropriate age estimation. लेकिन आपको combine करके देखना होगा. So obviously bone में भी variations आ सकती हैं if you are looking at the data coming from bones only. The following chronology of ossification data provides principal points for determining the age. The data are for males. अभी इसको देखते हैं. At birth, the lower end of the femur shows a center of ossification about ½ centimeter in the diameter. So if you find this, that is indicative of birth. By about 1.5 to 2 years, the anterior fontanelle should be closed. Again, age estimation. By the end of second year, the condylar portion of the occipital bone in the skull diffuse with the squama. Between 2 to 6, और यहाँ इन्होंने कोई डायग्राम भी शायद दी हुई है. I'll take you through the diagram जहाँ पे इन्होंने different centers of ossification दिखाए. Between 2 and 6 years, the number of carpal bones present on X-ray represent the approximate age in years. So ये सिर्फ 2 से 6 साल का है कि अगर उसमें आप carpal bones को देखें तो the number of carpal bones on the X-ray represent the approximate age in years. अगर 4 carpal bone नज़र आ रही हैं तो 4 साल उसकी age है. But that is specific only between this age bracket.
By 4 years in females and 6 years in males, a center of ossification also appears in the medial epicondyle of the humerus. So by about 6 years, condylar portion. So ये सारा कितना well defined है if you look at this, and you have to obviously remember this for your examination purposes, and also if you are working in the field of forensics कि किस एज ब्रैकेट का क्या लैंडमार्क है. Soon after birth, for example, not soon after birth, soon after 20th year, the articular facets in the ribs should be united. By 21-22 years, the ischial tuberosity should be fused, particularly in females. By साल, inner epiphysis of the clavicle fuses. So ये data काफ़ी well structured है और इससे आपको एज का अच्छा आइडिया हो जाएगा. If all the epiphyses are united, the person is above 25 years of age. So epiphyseal fusion is done. From these data, it is seen that the probable age can be determined within a year or so before the puberty, and within a range of 2. So अब बात ये है कि ये जो सारा ossification का data है ना, ये सारा valid है. I mean just before the age of puberty, क्योंकि 20 से 25 साल का जो आपके पास बंदा होगा जिसकी आपको एज आइडेंटिफाई करनी है बोन से, ये वो एज ब्रैकेट है जिसमें काफ़ी सारे जो एपिफिजियल लाइंस हैं वो फ्यूज़ हो चुके होंगे. सो दे विल नॉट बी गिविंग यू एनी कंक्रीट हिंट. सो ऑल दिस जो अभी हमने डिस्कस किया है, इट इज़ वेरी वैलिड प्री प्यूबर्टल. ओके. Now the areas which are routinely x-rayed for determination of age include wrist and hand, children में elbow, shoulder, pelvis, skull, so sternum and ribs as well. In clinical forensic medicine, most cases which come from the medical legal experts for age determination pertain to age of the consent and attainment of majority. The author's usual practice is to make a radiological examination of the wrist, elbow and shoulder joint, and when necessary hip and bone and clavicle. So that's ये पारिक अपनी expertise बता रहे हैं कि हम ऐसे करते हैं usually. अच्छा, ये तो मतलब प्री प्यूबर्टल हो गया कि आप एक्सरेज वगैरह करा लें. After 25 years of age, indication of age may be obtained from the following data. These changes indicate that the body is an elderly person, और क्या है एल्डरली, यानी 25 साल से ऊपर होने के साइंस क्या है बॉडी में. जीफॉइड प्रोसेस यूनाइट हो जाता है विद द बॉडी ऑफ द स्टर्नम 40 साल की एज में. द absence of closure of any suture of the skull indicates the age does not exceed 30 year. तो 30 ईयर के बाद सारे सूचर्स ऑब्वियसली क्लोज होंगे. इफ दे आर नॉट क्लोज देन इट्स नॉट मोर देन 30 ईयर्स. ओके. जनरली एविडेंस ऑफ कमेंसिंग यूनियन ऑफ सूचर इज फर्स्ट सीन ऑन द इनर एंड देन द आउटर सरफेस. द क्लोजर starts with sagittal. इस एज ब्रैकेट में जाके sagittal suture क्लोज होता है, then 35-40 coronal, then 45-50 lambdoid. So ये इस टाइम तक देखें sutures क्लोज हो रहा है, right? Okay. So the palate suture closes at about 45 to 50 years. Okay, right. So again ये सारा जो है ना, I hope you understand the concept. किस एज पर कौन सा सूचर क्लोज हो रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट. और ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि द एब्सेंस ऑफ क्लोजर ऑफ एनी सूचर, कोई भी सूचर अभी क्लोज नहीं हुआ है, दैट मीन्स के एज हैज़ येट नॉट ओवर 30 ईयर्स. बंदा अभी 30 साल के नीचे है, क्योंकि 30 साल पे ये क्लोजर स्टार्ट हो जाते हैं. ओके. नाउ द लिपिंग ऑफ लंबार वर्टिब्री occurring after the age of 40 years, so vertebral column में changes. The greater cornu of the hyoid unites with its body at this age bracket, or old age में laryngeal and the costal cartilages also ossify. So there is a lot of information that you can actually gather from studying the bones age के हवाले से. Okay. Then height and weight at full term childbirth, उसकी हाइट यूजुअली इतनी होती है. तो अब आपको आइडिया हो रहा है कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि कैसे इन पैरामीटर्स को देख के आप उस बॉडी का जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो उसका आप एज का आइडिया लगा सकते हो कि अगर हाइट इतनी है, टीथ इतने हैं, बोन्स में ऑसिफिकेशन सेंटर्स यहाँ मौजूद हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिला के यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन. ओके. सो दिस इज अगेन अ लॉट ऑफ डेटा विच यू कैन रीड योरसेल्फ के किस एज पर क्या हाइट यूजुअली एक्सपेक्ट हम करते हैं. राइट. ये सूचर के क्लोजर्स बताए हुए इन्होंने. सो एज एस्टिमेशन फ्रॉम द बोन्स, डायफ्राम शोइंग अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ क्लोजर ऑफ सूचर्स. ये वाला सूचर 40-50 साल की एज में क्लोज होगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, जो भी हमने ऊपर पूरा पढ़ लिया है. The particulars generally considered under this head, यानी miscellaneous particular, जिससे आपको एज का पता लगेगा. ऑब्वियसली बर्थ रिकॉर्ड अगर है तो आपको एज का पता लग सकता है. प्यूबर्टी पे जो चेंजेस आते हैं, दैट कैन गिव यू एन आइडिया ऑफ प्यूबर्टल एज, चेंजेस ड्यू टू ओल्ड एज. सो यू कैन स्टडी ऑल दीज थिंग्स एंड यू कैन हैव एन आइडिया कि ठीक है जनाब, इसकी एज ये हो सकती है बंदे की. आप देख के भी बता देते हो ना यार बाज़ों का कि ये बंदा 50 साल से ऊपर का लग रहा है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. ओके.
सो बर्थ रिकॉर्ड तो अगर मिल गए तो सबसे अच्छी बात है यार. चेंजेस occurring at puberty, there are secondary sexual characteristics obviously. In the male, fine downy hair begin to appear on the pubis by about 14 years और axilla में about 15 years, है ना. और फिर दाढ़ी मूछ निकलना शुरू हो जाती है, फिर आवाज़ भारी होती है, एडम्स एप्पल. सो these are all the changes by which you can identify the age. Females में breast begin to develop about 13 years of age, फिर menses वगैरह स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं 14 years के अराउंड आसपास, somewhere around 12 to 14 years. There is menarche age, axillary hairs, pubic hairs, all these are secondary sexual characteristics which give you an idea about age. और ओल्ड एज की वजह से भी ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें अपेयर होना शुरू हो जाती हैं. सो जनरल रिट्रोग्रेसिव चेंजेस लाइक रिंकल्स ऑन द फेस जो 40 ईयर्स पे स्टार्ट हो जाते हैं. आर्कस सिनेलिस, अ रिंग ऑफ ओपेसिटी, द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द कॉर्निया आल्सो स्टार्ट्स अपीयरिंग आफ्टर द एज ऑफ 40. So many graying of hairs and all these things, you know. Right. Now, ये तो आपने एज एस्टिमेशन. सो बॉटम लाइन ये है कि टीथ को स्टडी करके, बोन्स को स्टडी करके, एक्सरेज वगैरह से बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिला के यू कैन एस्टिमेट द एज प्रीटी क्लोज टू एक्यूरेट. देन मेंशन द सर्कमस्टेंसेज इन विच एज में बी इन क्वेश्चन. वो कौन सा वक्त होगा जब आपको एज मालूम करने की जरूरत. भाई सीधी सी बात है यार, सिविल केसेस में भी पढ़ सकती है, क्रिमिनल केसेस में भी पढ़ सकती है. सो मैनी डिफरेंट सिनेरियोज जिसमें आपको एज पता करनी होगी. Evidences as to age may be demanded in the following circumstances. For example, criminal responsibilities, judicial punishment, kidnapping का केस, रेप का केस, वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्सेंट दिया था फीमेल ने या नहीं. अगर एज चाइल्ड एज है तो रेप का केस बन गया. इस तरह की चीज़ें. मैरिज कर सकता है कंसेंट से या नहीं, एज कितनी है. एम्प्लॉयमेंट. सो दीज आर ऑल सो इम्पॉर्टेंट. एबॉर्शन के केसेस, इम्पोर्टेंस इन स्टेरिलिटी, सारी चीज़ें आर इनके लिए एज फंडामेंटल है. ऑल ऑफ दैम. ओके. अब इनमें सब में एक एक दो पैराग्राफ की कहानी लिखी है जो हम पढ़ लेते हैं, बट दीज आर ऑल वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल. सो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एग्जांपल. इन लॉ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी टू पनिशमेंट. और अगर आपको किसी को पनिश करना है तो एज डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं उसको चाइल्ड लॉज के ज़रिए तो आपको सेंटेंस नहीं देना, तो पूरा सिस्टम ही डिफरेंट होगा. जुवेनाइल जेल्स होंगी, सब कुछ अलग होगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एज देयर. ओके. And judicial punishment, same story. You have to identify if it's a person below 16 in girls and below 18s girls में और below 16 boys में who have committed a crime. They are trialed under juvenile court. तो ये बड़ा important है identify करना. Kidnapping, this means carrying away a person from lawful guardianship by illegal means. किसी को अगवा कर लिया. So that is important. Okay. And if her age is under 18 years to so the whole point is कि अगर आप बालिग को कहीं ले जा रहे हैं तो उसका कंसेंट उसमें शामिल है, लेकिन अगर एज कम है, चाइल्ड एज है और उसको कहीं ले जा रहे हैं, सो दैट कम्स अंडर किडनैपिंग. ओके. राइट. And it is an offense. For example, there are some scenarios which are important, I think, to go through. To kidnap or abduct a child with intention of taking dishonestly any movable property from its person if the child age is under 10 years of age. आप अगर इसको उठा के ले जा रहे हैं कहीं, that's illegal. Okay. To kidnap or abduct a minor from lawful guardianship if the age of the boy is under 16 and that of the girl is under 18, that is also illegal. To procure a girl for illicit intercourse or to sell or buy a girl for the purpose of prostitution under 18 years of age. क्योंकि consent नहीं है ना, 18 साल से कम है तो ये अपनी consent नहीं दे सकती लड़की, तो ये भी illegal है. So I mean understandable चीज़ें सारी. To import into India from a foreign country a girl for illicit intersexual practices के लिए अगर 21 साल से कम लड़की भी बाहर से कहीं से बुला रहे हैं विदेश से, that is also illegal. Okay. Rape is the sexual intercourse by a man with a girl under the age of 15 years. That's considered rape. Okay. Even if she be his wife or any other girl under 16 years of age. Very important. तो ये बच्चों वाली शादी का मामला है ना कि 15 साल से कम अगर इंटरकोर्स कर रहे हैं आप फीमेल के साथ, even if she is your wife, that's considered rape. The Child Marriage Restraint Act जो है lays down the girl under 18 years of age and boy under 21 cannot contract a valid marriage. But again, that there are certain religious issues that are associated with this. Attainment of majority. Under Indian Majority Act, persons domiciled in India attain majority on completion of 18 years, except when under a guardian appointed by a court or under the court of what. So basically, this is the age where you attain the majority. एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू बी 14 साल से कम उम्र की एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है, ऑल्दो हो रही होती है. आप देखते हैं इंडिया पाकिस्तान में कई जगहों पे चाइल्ड लेबर बड़ा कॉमन है. इन्फेंटिसाइड,
A charge of infanticide can be sustained only if it can be proved that the fetus had attained the age of viability which is 210th day. तो ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि इन यूट्रो जो बेबी था वो इस एज तक पहुंच गया था या नहीं पहुंच गया था, बिकॉज इन्फेंटिसाइड का केस इस एज के साथ एसोसिएटेड है. सेम इज द केस विद क्रिमिनल अबॉर्शन. Importance and sterile, a boy is sterile though not important before puberty. There is no upper. तो इन केसेस में भी आपको एज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि प्यूबर्टी की एज अटेन हो गई है या नहीं हो गई है. बंदा एज अ विटनेस कोर्ट में आ सकता है गवाही देने के लिए या नहीं, एज आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है. नाउ although under section 118 IEA no age limit is laid down for this purpose, every person is competent to testify, but obviously आपको ये पता तो होना चाहिए कि जो witness है उसकी age किस bracket में fall करती है. So age identification becomes an important parameter. The determination of age may be required for identification of an individual. और age certificate क्या चीज़ होती है? वैसे usually birth certificate ही होता है, लेकिन बाज़ cases में you have to give the age certificate. तो you give a very detailed certificate कि ये identification marks हैं, मैंने इस वजह से इसकी age ये बता रहा हूँ, and the medical legal officer does that. Okay, so congenital. This is about general development. By this we mean the recognition of a person by the height, weight and general muscular. उससे आपको age का idea हो जाता है. Congenital feature, these include personal appearance, anthropometric measurements, fingerprints. इसकी हमने बात अभी डिटेल में हम करेंगे, right? Fingerprints and everything. So stay tuned for that. Now, what I was trying to give you, from this heading is basically that there are certain parameters by which you can actually identify age in the forensic cases. And then we discussed about why age identification can be important under certain circumstances. So criminal cases, identification, rape, infanticide, criminal abortion, all these are the areas जहाँ investigation में ये पता करना ज़रूरी है कि जो भी body जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसकी age क्या है. So age is a very important पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर. अब हम बात करेंगे उन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की जो रूटीनली फोरेंसिक्स में यूज़ होते हैं. आप कई सारे फिल्मों में, ड्रामों में ये चीज़ तो लाजमी ही देखते हैं ना, फिंगर प्रिंटिंग. सो फिंगर प्रिंट्स का सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दे हैव सम अदर नेम्स एज वेल. सो फिंगर प्रिंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्टाइलोग्राफी, डर्मेटोग्लिफिजिक्स एंड गैल्टन सिस्टम. सो सिनोनिमस वर्ड ये आपने कम सुने होंगे, फिंगरप्रिंट सबसे ज़्यादा सुना हुआ है. ठीक है. अच्छा, फिंगरप्रिंट का मतलब ये है कि इट्स एन इम्प्रेशन विच इज़ मेड बाय द बॉल ऑफ अ फिंगर. सो ये जो आपके फिंगर्स हैं, सो इफ दिस इज़ योर थंब एंड देन इंडेक्स फिंगर एंड 2, 3, 4 एंड 5, इसका ये जो बॉल एरिया है पामर साइड पे, जब इस पर इसको किसी भी सरफेस पे आप टच करते हैं, सो देयर आर प्रिंट्स, बिकॉज आपके हाथ पर इस तरह के प्रिंट्स हैं लाइक दिस. दीज आर कॉल्ड फिंगरप्रिंट्स एंड दीज आर बिकॉज ऑफ सबक्यूटेनियस केराटिन रिजेस. The fingerprint system is based on principle that the skin of the base of the principle that the skin of the balls of the fingers and the thumbs is covered with the ridges and the grooves. और ये ridges और grooves जो हैं ये patterns बनाते हैं. The important features of the ridges are that they are present from birth. हमेशा से रहती हैं, आपको पता है. एपिडर्मिस डर्मिस ये आपका पैदाइशी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि बाद में जाके एक्वायर होता है. दे रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड दे आर वेरी यूनिक टू द इंडिविजुअल्स. ओके, दे आर एब्सोल्युटली इंडिविजुअल, यानी आपका फिंगरप्रिंट किसी दूसरे से मैच नहीं करेगा. दैट्स द ब्यूटी ऑफ फिंगरप्रिंटिंग. नाउ दे आर नॉट एंटायरली अलाइक even in the identical twins. So that's the important thing. That's why they are used as personal identification, क्योंकि सबके अलग अलग होते हैं. Now these patterns are classified on the basis of arrangement of ridges into 4 main types: loops, whorls, arches and composite, which is combination of any 2 or 3 of them. Okay, और ये आपको बिल्कुल क्लियर नज़र भी आता है. So for example इस फिंगरप्रिंट को आप देखें, so there are arches. अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो. So you see there are arch formation, so that's the arch formation. This is the arch. So इस तरह के फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न को हम कहते हैं arch pattern. Okay, then there is a loop pattern. Loop pattern में there is a central core और उसके फिर ये जो कोर्स के साइड में निकल रही हैं ridges, these are called delta. So you see these are the loops. hair pin loops इन्हें हम कहते हैं. जैसे बालों में लगाने वाली पिन होती है ना इस तरह की काले रंग की, इस तरह के देखें loops बने हुए हैं. And loops sometimes are double loops as well. So let me show you. So here for example एक लूप पैटर्न इधर बन रहा है और एक लूप पैटर्न इधर बन रहा है. So these are double loops. Sometimes there are
डिफरेंट पैटर्न. सो से फॉर एग्जांपल कंपोजिट में मल्टीपल चीज़ें होंगी, उसमें लूप्स भी होंगे, आर्चेस भी होंगी, समथिंग लाइक दैट. सेंट्रल एरिया को जिसके अराउंड सारा अरेंजमेंट होता है, दैट इज सेंट्रल एरिया विच इज़ नोन एज कोर, एंड द पेरिफेरल एरियाज ऑफ द रिजेस इज नोन एज डेल्टा. इट इज़ एक्सेप्टेड दैट द चांस ऑफ द टू फिंगरप्रिंट मैचिंग 16 rich characteristic are infinitely small. इसका मतलब ये है कि हम सबकी फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं. सिंपल वर्ड्स में यही है. In the world's crime records, no two identical fingerprints have ever been reported. So that's a big deal. While in the case of criminals, impressions of all the digits of both hands are taken and preserved by the police for future identification. So पूरा फिंगरप्रिंट का एक डेटाबेस तैयार होता है कि जो भी क्रिमिनल बंदा है, या जो भी अगर आपके पास इवन क्लिनिकल केस भी है जिसमें मेडिको लीगल एंगल है, तो उनके फिंगरप्रिंट सेव कर लिए जाते हैं डेटाबेस में. ठीक है. Right. It is customary in India to take usually left thumb impression of the illiterate person in lieu of the signature on many legal and other documents. यानी साइन की जगह, पेपर्स पे होता है ना आखिर में सिग्नेचर करें जी, उसकी जगह थंब प्रिंट भी ले लिया जाता है इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. और ये बड़ा अच्छा सिस्टम है आइडेंटिफिकेशन का, बिकॉज दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एजेस. बर्थ से मौजूद होता है तो बच्चे का भी फिंगरप्रिंट होगा, एंड इवन द पुट्रिफाइड बॉडीज हैव एक्सेसिबल फिंगरप्रिंट्स. And this is very much individual. So absolute identification is possible for an individual. अगर आपके पास उसका पहले से फिंगरप्रिंट है तो वो मैच करके आप बता सकते हैं कि ये यही बंदा है. No special training or expensive instrumentation is required. It's a very simple, straightforward process. बल्कि अब तो काफ़ी ऑटोमेशन आ गई है, सिस्टम बता देता है आपको मैच करके. The actual print is always available to check and suspected error. तो दोबारा उसको, आई मीन दिस इज़ समथिंग कि एक दफ़ा अगर फिंगरप्रिंटिंग इमेज आपके पास आ गई तो वो हमेशा पड़ी हुई है, कोई भी आके उसको एनालाइज करे. द प्रिंट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर एज कोडेड और डिजिटलाइज्ड मैसेज इमेजेस के फॉर्म में. द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम विच इज कॉल्ड AFIS, ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इज नाउ अवेलेबल इन मैनी ऑफ द फोरेंसिक सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड. The ridge impressions are due to moistening of the skin by sweat and sebum from the skin at the scene of the crime. They are found on the doorknobs, या अगर कोई मर्डर वेपन है, इस तरह की चीज़ें, तो उन पर ये फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं. Fingers soiled with blood or grease also leave appropriate impression. So fingerprint काफ़ी रोबस्ट चीज़ है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फिंगरप्रिंटिंग नहीं मिलेगी, बहुत ही मुश्किल कोई, यानी अगर किसी ने ऑब्वियसली फिंगर्स के ऊपर बाकायदा वैक्सिंग कर रखी है या ग्लव्स चढ़ा रखे हैं तब आपको फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे, अदरवाइज फिंगरप्रिंट्स मिल ही जाते हैं. सो दे आर वेरी गुड मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन. ओके. The practical applications of this method include fingerprinting की बात हो रही है. Recognition of chance impressions left at a scene of crime. आपको यहाँ देखा ना आपने CID वगैरह में कि वो फिंगरप्रिंट्स उठा रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से. Identification of the weapon used, identification of the criminals, suiciders, identification of the decomposed bodies. So these are all, I mean, सबको आपको पढ़ के ये अंदाज़ा होना चाहिए कि fingerprinting are very good identification methodology. The ridges of fingers and hands are studded with minute pores which are the mouth of sweat glands situated below the epidermis. The pores are permanent and different in number and size and shape in different persons. The method of identification of examination of pore is known as poroscopy या Lockhart method. जैसे fingerprinting होती है ऐसे poroscopy भी एक टेक्निक है. ठीक है. एक नमस्ते टेक्निक है, ये ज़रा सुनने मज़े की चीज़ है ये. In one case, partly decomposed and crushed hand up to the wrist level was brought for examination. There was a question whether this hand belonged to the person admitted in the orthopedic ward या नहीं. And Dr. Subramaniam got an idea. When we keep both the hands in namaste position, यानी एक हाथ ऐसे और दूसरा हाथ नमस्ते जैसे करते हैं, you know that, yeah. Turn them to right and left and observe in normal persons both hands fit in or not. On X-ray also, the bones tally and fit in. So what an idea. I mean, obviously जब आप फील्ड में काम करते हैं तो you have your own techniques, okay. Now जिस तरह फिंगर प्रिंटिंग एक important टेक्निक है, बिल्कुल इसी तरह फुट प्रिंट्स भी लिए जाते हैं, which is known as podogram. It's an impression left by the sole of the foot. The skin pattern of the toes and the heels are distinctive. एंड अक्सर क्राइम सीन पे कौन बंदा कहाँ से गुजरा है, नॉट इवन द फुट प्रिंट्स बट ऑल्सो द शू प्रिंट्स आर टेकन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस. ओके. Congenital malformations such as supranumerary or webbed fingers or toes, and these are rare but they are also important identification marks such as birthmark. बाज़ लोगों के birthmarks होते हैं, moles होते हैं बॉडी पर, identification में यूज़ होती हैं ये चीज़ें. There can be acquired peculiarities which are specific to an individual such as occupational marks, tattoo marks, scars. इनके बारे में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे, right?
बट दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. सम ऑक्यूपेशनल मार्क्स आर इंपॉर्टेंट. से फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा पान बनाता है, पान की रेडी लगाता है, तो उसके हाथ पे वो कत्ता वगैरह सारा कलरिंग होगी. अगर कोई बंदा किसी फ्लोर मिल में काम करता है फॉर एग्जांपल, तो उसको कोई पर्टिकुलर स्टेन्स हो सकते हैं अगर पेंट है, ग्रीस की एरिया में काम कर रहा है. सो occupational associated marks can also be used as points of identification. So all what we are trying to do is, what are the different things which can be utilized to identify a person. अब body पे कुछ marks की बात करते हैं. So tattoo marks for example and scar marks, so they are also important identification marks. So tattoo marks for example, they are designs affected by multiple small punctures जो कि स्किन में होते हैं विद द कलर, जो कि बाकायदा डाई डिप होती है. सो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज़ माय हैंड और मैं यहाँ पे एक टैटू बनवा रहा हूँ, तो जो टैटू इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली छोटे छोटे पंक्चर करता है मेरी स्किन में और डाई को इंसर्ट करता है, एंड दैट्स हाउ माई स्किन इज़ बेसिकली स्टेन्ड. The permanency of the tattoo marks depend upon the type of the dye which is used and the depth of the penetration. Black, blue, red dyes are more durable as compared to the other colors. To reveal latent tattoo marks, the use of high contrast photography, कंप्यूटर इमेज इन्हांसमेंट, अल्ट्रावायलेट लैम्प, ये सारी उस सिनेरियो में बात हो रही है कि से फॉर एग्जांपल आपने एक टैटू बनवाया अपनी बॉडी पे और अब आपने उसको रिमूव करवा दिया है. सो इवन द रिमूव्ड टैटू विल हैव सम ट्रेसेस जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन टेक्निक्स के जरिए. Tattoo marks on unidentified putrefied bodies may be photographs with sharp definition. तो अच्छे कैमरे यूज करके इवन पुट्रीफाइड बॉडीज में भी टैटू की इंक को कैच किया जा सकता है. Now, this method is of specific value in the cases of the bodies which are recovered from water. A tattoo mark described by relatives which is absent at the autopsy may lead to mistaken identification unless if it is remembered that lymph nodes in the neighborhood of the tattoo mark always show the deposit of the pigment used. So, again अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि suppose there is a person और उस बंदे ने अपने हाथ पे टैटू बनवाया और उसकी डेड बॉडी कहीं से मिली है, द बंदा वॉज मिसिंग एंड ऑल दैट, एंड उसकी फैमिली कह रही है आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करने के लिए कि उसके राइट आर्म में या लेफ्ट आर्म में देयर वाज अ टैटू जो कि दिल बना हुआ था और उस दिल पे लिखा हुआ था AQ. ओके, मेरा नाम है बाय द वे आसिफ कुरैशी. सो अब आप जब बॉडी आपने आइडेंटिफाई की है, बाकी सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, बट ये टैटू आपको नहीं मिल रहा. हो सकता है इस बंदे ने ये टैटू निकलवा दिया हो, बट कीपिंग दिस इन माइंड ऑलवेज चेक द लिम्फ नोड, क्योंकि जब यहाँ पे डाई गई होगी इस एरिया पर तो वो डाई ड्रेनिंग लिम्फ नोड में गई होगी, है ना. अब उस ड्रेनिंग लिम्फ नोड, ऑटोप्सी में आप ये सब चेक करोगे ना, तो ये ड्रेनिंग लिम्फ नोड निकाल के चेक किया जाएगा तो पता लगेगा कि ये स्टेन हुआ है या नहीं हुआ. सो इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड. A tattoo design may be altered or eliminated, or a second one superimposed on the previous one in an attempt to conceal the identity. Again वही बात कि एक टैटू बना हुआ था, बंदा वो चेंज करवा रहा है टैटू अपनी आइडेंटिटी चेंज करने के लिए. Various artificial means have been devised for eliminating the tattoos. Dermabrasion, application of caustics, electrolysis, surgery, laser beams, इन तमाम चीज़ों से टैटू को हटाया जा सकता है. लेकिन लिम्फ नोड से कैसे हटाओगे भाई? Exposure to the laser beam destroy the pigmented cells and evaporates the dye, and the tattoo can be removed. While describing a tattoo mark, a special note should be made for its anatomical situation, size, color, and design. Exactly body के किस part पर है tattoo, यानी उसकी situation, size क्या है. This is how you describe the tattoo in your medical or medical legal report. The important complications from tattoo marks mainly relate to sepsis. अगर आप देखें, दिस इज़ अ जनरल फिनोमिना कि अगर आप बहुत ही कुछ सस्ते वाले टैटू बनाने वाले के पास चले गए, वो नीडल्स वो सारा इतने सारे लोगों में यूज़ कर रहा है जिन बंदों को अगर बीच में किसी को HIV हुआ, किसी को HCV हुआ, दैन द पर्सन विल बी अफेक्टेड. तो सारा सिस्टम वहाँ पे ऐसे होगा, कोई हाइजीन नहीं होगी, कोई स्टेरलाइजेशन नहीं होगी. सो दीज कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम टैटू. लेकिन जो बहुत अच्छे टैटू पार्लर्स हैं वहाँ पे ज़ाहिर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है. और मेडिकल लीगली टैटूज अब तक आपको आइडिया हो गया व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन. सो मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ टैटू मार्क्स इज एज फॉलोज. दे मे इंडिकेट आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, रेस ऑफ द पर्सन, रिलीजन ऑफ द पर्सन, बिकॉज बाज लोग स्पेसिफिक टैटू बनाते हैं, हनुमान, लॉर्ड कृष्णा, क्रॉस बना दिया, क्राइस्ट बना दिया, दिस टाइप ऑफ थिंग. प्रोफेशन, सम पीपल DNA का मार्क बनाते हैं, तो आपको आइडिया होगा ये मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट है, स्टेथोस्कोप बनवा लेते हैं बायोलॉजिस्ट, तो परहैप्स दैट्स अ पर्सन हु लव डॉक्टर्स और इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ अ डॉक्टर. सो बिहेवियरल
characteristic. Sometimes people make very very exotic birds बनाएंगे, heart बनाएंगे, river बनाएंगे, so उनसे उनके behavioral thinking thought process का भी पता चलता है. Social status, tattoos are generally practiced in India by lower class of the society. Look at this. The upper socio-economic group usually do not have massive tattoos. Political convictions, किसी political party की कोई चीज़ बना दी, फैशन के तौर पे बना सकते हैं. बहुत से स्पोर्ट्स वाले लोग या film industry के लोग, glamour seeking persons. So these tattoos are important marks of identification. Okay, तो they are always considered important whenever we, पहले ये नहीं होता था, आज से 10, 15, 20 साल पहले tattoos इतना ज़्यादा कोर्सेज में बुक्स में नहीं होता. अब चूँकि इसका ट्रेंड बढ़ गया है तो इनका जिक्र भी बढ़ गया है. Then scars. Scar is a permanent cicatrical mark which result from healing of a wound. और ये परमानेंट है तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन. बेसिकली स्किन में कोई वूंड हुआ और जब स्किन हील करती है तो फाइब्रोटिक टिश्यू की वजह से स्कार बन जाता है. ओके, आ स्कार इज डिवाइड ऑफ हेयर फॉलिकल. उस पर हेयर नहीं ग्रो करते, स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, पिगमेंट्स नहीं होते, बेसिकली फाइब्रस टिश्यू होता है सारे का सारा. दैट्स बाय द वे अ टैटू. ओके, right. Now times required for scar formation, age of the scar, ये सारे important concepts हैं जो मुझे भी आपके साथ discuss करने हैं. Now this varies according to the nature, size and method of the wound healing. अब ज़ाहिर है डिपेंड करता है. इनफैक्ट इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ जो नहीं लिखी वो ये भी है कि साइट ऑफ वूंड हीलिंग. अगर स्कार किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पे फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, वो डिफरेंट होगा उस स्कार से जो एक्सटेंसर सरफेस पे बनेगा. सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो स्कार की मैचुरेशन में हेल्प करते हैं. अ क्लीन इंसाइज्ड सर्जिकल वूंड नॉर्मली हील्स इन अबाउट अ वीक, and if it's a bad dirty wound it may take some more time. In clean situation scar forms quickly if the healing is by first intention, but it will be delayed if there is a sepsis involved. Infection अगर हो गया है. Scar formation is earlier in vascular area जहाँ blood supply अच्छी है as compared to the area जहाँ पे blood supply अच्छी नहीं है. ओके, तो ये सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए स्कार फॉर्मेशन के हवाले से. दैन और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर से फॉर एग्जांपल यू सी ए स्कार इन अ पर्सन जिसकी डेड बॉडी आपको कहीं मिली है, ऑलवेज थिंक अबाउट फ्रॉम फॉरेंसिक पर्सपेक्टिव, और उसमें स्कार बिल्कुल इनिशियल फेज में है. सो दैट विल टेल यू कि इसकी बॉडी को अभी 1-2 हफ्ते पहले ही यहाँ पे कोई कट लगा है तो अब स्कार बन रहा है. ओके, नाउ स्कार्स एंड कॉजेटिव एजेंट्स एंड इंसाइज्ड वूंड प्रोसीजर्स जो है दे प्रोड्यूस अ लीनियर स्कार, अ गैपिंग वूंड, अ वाइड स्कार, एंड स्टैप्ड वूंड एंड इलिप्टिकल स्कार. सो अगर आप सर्जरी करवा रहे हैं, आपकी अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है और ये आपके ग्रॉइन एरिया में यहाँ पे एक स्कार छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा है, सो दैट्स परहैप्स इंडिकेटिंग इंसाइज्ड वूंड, यानी ये इंटेंशनली किया गया था. लेकिन अगर कोई किसी ने स्टैप किया है तो उसका वाइड स्कार होगा, इलिप्टिकल स्कार होगा, इट विल बी डिस्टर्ब्ड इन शेप, इट विल नॉट बी अ क्लीन वन. ओके, burns, scalds and corrosive produces irregular scars, and that makes sense. Sometimes also keloid formation, which is hypertrophic scar. Surgical operations have a linear scar because that's a very clean incision, so easy. Smallpox vaccination scars are also there, and also TB vaccination scars. 1 to 3 in number are circular or oval. There can be scars because of syphilis, because of smallpox and measles. So all these scars are routinely seen in general population. And how do you estimate and comment on the age of the scar? Approximate age of the scar can be estimated by the aging process. So vascular to avascular 2 weeks to 2 months. Tender to non-tender, यानी शुरू में इसमें tender painful feeling होती है, बाद में नहीं. So 2 to 6 months. If it is tender, it is perhaps post 2 weeks after the initial wound. अगर वो अब नॉन टेंडर हो चुका है तो यानी 6 महीने तो कम से कम गुजार चुका है. ठीक है, बट ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो वैस्कुलरिटी उस एरिया की कितनी है, ये वैस्कुलर है वो एरिया, वैस्कुलर है, फ्लेक्सर सरफेस है, एक्सटेंसर सरफेस है, इन सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है. ओके, now scar produced in the childhood grow in size with the natural development of the individual, especially if situated on the chest. A well-developed scar never disappears, but scars from minor wounds may become difficult to detect. So scars basically bottom line point ये है कि ये कभी गायब नहीं होते. ठीक है, अगर आपको स्कार एग्जामिन करना है देन हाउ डू यू डू द एग्जामिनेशन ऑफ द स्कार इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. इट शुड बी वेरी गुड लाइटिंग एरिया, अच्छे से आपको उस एरिया को देखना है एंड आपको उसका साइज देखना होगा, कहाँ पर है, साइज देखना होगा, शेप देखना होगा, कलर, ये कॉमन सेंस की चीज़ है. यू मे फोटोग्राफ इट ऑब्वियसली फॉर एविडेंस पर्पसेस. फेंट स्कार्स मे बी रेंडर्ड विजिबल बाय एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट लाइट. सो इफ यू हैव एनी डाउट यूज द यूवी लाइट.
और मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली बिकॉज हम आइडेंटिफिकेशन की बातें कर रहे हैं. सो स्कार्स आर इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स. स्कार हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन. द शेप ऑफ द स्कार से आपको पता लगेगा कि ये सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है या स्टैब किया है किसी ने या ये बॉम्ब ब्लास्ट में बंदा आ गया था. तो स्कार की शेप से आपको उसकी कॉज का पता लग सकता है. एज ऑफ द स्कार ऑल्सो कॉरेस्पॉन्ड टू द टाइम ऑफ द occurrence ऑफ द इवेंट. 6 महीने पुराना इवेंट है, 2 महीने पुराना, दिस टाइप ऑफ थिंग. ओल्ड स्कार्स ऑन द रिस्ट or throat indicate previous attempts at suicide, so you'll have an idea. बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके forearm पर बहुत सारे scars होते हैं. So maybe they are काफ़ी सारी psychological conditions में होता है, लोग अपनी skin को cut करते हैं blade से. So you can have like multiple ideas. If as a result of accident the injured person may be disfigured, sometimes wounds may be deliberately kept infected or rarely covered with irritants. बाज़ लोग होते हैं, there are so many psychological conditions. The accused may attribute scars of wounds to disease or therapeutic procedure. Accused तो आपको कभी भी सच नहीं बताएगा ना, ज़ाहिर है. वो कहेगा यार ये तो इस वजह से हुआ. You have to have an eye जिससे आप कैच कर सको कि ये स्कार किस वजह से हुआ है, राइट. तो ये सारी यहाँ बातें बड़ी आसान से लिखी हुई हैं. Acquired malformations such as malunited fractures, dental extractions and fillings and polio and other deformities, they may also help to identify the cause of the scar. Associated findings हैं ये. Then miscellaneous data, well, not directly in context of a scar. So basically scars के बारे में and tattoos के बारे में you should know कि these are important marks of identification and they should not be missed in any investigation जहाँ आप कोई भी forensic analysis कर रहे हैं. Next question that we have to address is also very important because it talks about obliteration of personal identity. So discuss the ways in which the identity of a dead person may either be effaced और obliterated. यानी वो कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनसे बॉडी की आइडेंटिटी डैमेज हो सकती है. सो देयर आर सेवरल मैकेनिज्म. सो फॉर एग्जांपल देखें आईडी हम कैसे करते हैं. आईडी यूजुअली इज डन बाय यूजिंग फिंगरप्रिंट्स. कोई ना कोई बॉडी पे आईडी मार्क हो, जैसे टैटू मार्क्स फॉर एग्जांपल, स्कार्स, हेयर, टीथ. अगर इन आर्टिकल्स को डैमेज कर दिया जाए आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, देन आइडेंटिफिकेशन बिकम्स अ डिफिकल्ट जॉब. ओके, ऑल्दो आजकल चीज़ें काफ़ी, मैं बार बार बता रहा हूँ कि एडवांस हो गई हैं और डीएनए एक्सट्रैक्शन से भी पता चल सकता है. डीएनए फिंगरप्रिंट की आजकल हम बात करते हैं. सो नॉट सिंपली द फिंगरप्रिंट्स विच आर प्रेजेंट फिजिकली ऑन द फिंगर्स बट ऑल्सो द डीएनए फिंगरप्रिंट्स. बट एनीवेज दीज आर दी कॉमनली यूज. अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फैसिलिटीज़ हर जगह अवेलेबल नहीं होती, तो ये तो काफ़ी स्टैब्लिश्ड सारी चीज़ें हैं और अगर इनमें कोई गड़बड़ कर दी जाए तो बंदे की आइडेंटिफिकेशन डिस्टर्ब होती है. अच्छा, इफ़ द बॉडी इज़ attacked by animals such as dogs and that's pretty common. वो bodies जिनको बरी किया जाता है, दफन किया जाता है ज़मीन में, I mean there are huge chances कि rats and dogs they actually dig out the graves, fresh bodies से वो attract होते हैं and they try to eat their flesh. So they can also damage the identity of the body. If the body is burnt, then the identity is obviously completely lost. अगर putrefaction के process को advance कर दिया जाए, यानी if the dead body पर कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं एंड से फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे अमाउंट में मैगट्स इस पर डाल दें, सो द पुट्रिफिकेशन प्रोसेस विल बी एडवांस्ड. तेज़ी से बॉडी की आइडेंटिटी डैमेज हो जाएगी. ठीक है. देन बॉम्ब एक्सप्लोजन, दैट बेसिकली अगेन इज़ द सॉर्ट ऑफ बर्निंग थिंग बिकॉज यहाँ पे भी फिनोमिना वही है, जैसे बॉडी बर्न होके आईडी पूरी डैमेज हो रही है, सारी बॉडी राख में कन्वर्ट हो रही है, बिल्कुल इसी तरह बॉम्बिंग में भी आइडेंटिटी इज़ लॉस्ट. नॉट ओनली दैट द आइडेंटिटी इज़ लॉस्ट बट ऑल्सो जो पार्ट्स हैं बॉडी के, I mean, they are shattered. So, कहीं किसी का हाथ मिल रहा है, कहीं किसी का पाँव मिल रहा है. So, it's very difficult to identify which part of the body belongs to which person. Then, throwing different parts of the body to different places. Again, जो bomb explosion में phenomena होता है, एक feature उसका ये भी है, right? Intermingling of parts from different bodies or animals. So, ये intentional identity को damage करना. Throwing of the body into the sea, lake, well और canal. आपने कई सारी movies देखी हैं जिसमें ये होता है कि जी डेथ के बाद बॉडी को डाल दिया जाता है किसी न किसी समंदर में, लेक में, झील में, ये सोच के कि बॉडी डैमेज हो जाएगी, मिलेगी नहीं किसी को. सो इन दैट वे ऑल्सो द आइडिया इज लॉस्ट. डिजॉल्विंग द बॉडी इन एसिड्स. सो बॉडी इज देन, I mean, there are so many examples in judicial history के जिसमें मर्डरर्स ने
टैंक्स भरे हुए एसिड से और उसमें डेड बॉडीज डाली हैं ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन ख़त्म हो जाए. पुटिंग द डेड बॉडी ऑन अ रेलवे ट्रैक सो दैट द ग्रॉस म्यूटिलेशन इज ब्रॉट अबाउट, द बॉडी बीइंग रिड्यूस्ड टू शेपलेस पल्प एट सम टाइम्स. बिकॉज अगर आप रेलवे ट्रैक पे कोई बॉडी होगी तो ज़रा इमेजिन करें ना, रेल इस पे से अगर गुजरती है, इट्स नॉट ओनली द प्रोसेस जिसमें बॉडी कट होगी बिकॉज ऑफ द व्हील्स एंड द प्रेशर ऑफ द रेल, बट इट इज़ ऑल्सो, यू इमेजिन मोमेंटम कितना ज़्यादा है, फ्रिक्शन एंड हीट एनर्जी. द बॉडी समटाइम्स इज जस्ट कन्वर्टेड इनटू अ राउंड ball of pulp, so the idea is completely lost. And these methods or some of these methods have been routinely used by criminals. कई सारी मूवीज में इनका जिक्र आता है, कई सारी केसेस में आप CID में भी आप देखते हो कई जगहों पे कि बॉडी को कैसे आईडी को लॉस्ट किया जा सकता है. डॉक्टर राजू's केस की एक इन्होंने एग्जांपल दी है. इन दिस केस द आर्मी डॉक्टर dismembered the remains of his missus whom he killed and put them in different newspaper, covered bundles, threw them to Husainagar. A dog brought the same out and onlookers informed the police. So, लोगों ने देखा फिर उसको. So, I mean, see, people have been doing these nasty stuff. So, the next thing, perhaps the last heading in this chapter, I guess, and it's about the voice test. अच्छा, वॉइस टेस्ट इसमें जो इशू डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि देयर आर डिफरेंट मोडालिटीज़ ऑफ आइडेंटिफाइंग द पर्सन, जो हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करते हुए आए. वॉइस टेस्ट के लिए अंडर सम प्रोसीजर्स द कंसेंट ऑफ द पर्सन जिसका वॉइस टेस्ट करना है. सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ पर्सन और इसने कोई क्राइम कर रखा है, द पर्सन इज़ अक्यूज ऑफ समथिंग, अभी इस पर ट्रायल चल रही है. क्या इसकी मर्जी के बगैर इसका वॉइस टेस्ट किया जा सकता है फॉर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन? सो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन बाज़ स्टूडेंट्स को होती है, वो यहाँ क्लियर की गई है. सो इफ़ द मजिस्ट्रेट बिलीव्स कि देयर इज़ रियली इंपॉर्टेंस कि इसकी वॉइस टेस्ट, आई मीन दिस इज़ अनअवॉइडेबल, तो इवन अगर पेशेंट तो नहीं है, सॉरी, अक्यूज्ड कंसेंट नहीं दे रहा, तब भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है इसको वॉइस टेस्टिंग के लिए अगेंस्ट द विल ऑफ द अक्यूज्ड. ओके, सो वॉइस टेस्ट यूजिंग अ वॉइस सैम्पल इज नॉट टेस्टिमनी बट इट कॉन्स्टिट्यूट identification data. So there is a specific case, Ritesh case, state of UP. The question arose as to whether the voice spectrographic test without consent of the person can be done. Is it against Article 23 of the Constitution? So the bottom line of the whole story is that it can be ordered by the magistrate. So the magistrate is enabled by the provision in the Constitution to order the voice spectrographic test, even if the accused is not giving direct consent. Okay, so वैसे I mean these things have now, किसी ज़माने में बड़ा मुश्किल काम होता था वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी, बट अब वी हैव अ लॉट ऑफ टूल्स फॉरेंसिक्स की वर्ल्ड में, सो दैट्स नॉट अ बिग डील. बट दिस पैराग्राफ इज नॉट डीलिंग विद द टेक्नोलॉजीज यूज फॉर वॉइस आइडेंटिफिकेशन, रादर इज डीलिंग विद द कंसेंट इशू कि अक्यूज अगर मना कर दे तो उसका वॉइस सैम्पल आप ले सकते हैं या नहीं. सो मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द आइडेंटिफिकेशन चैप्टर. प्रीटी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फॉरेंसिक्स. नेक्स्ट टाइम फिर बात करेंगे किसी और चैप्टर की. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल विद योर colleagues, hit the bell icon. My name is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures.